Assalamualaikum students, I hope you all are good. Welcome to my channel and I'm going to discuss about Pakistan-Russia relation. So, implications of Pakistan-Russia relation. A historical context will be discussed in this video. आज मैं आपको पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं उनमें जो पेचीदगियाँ हैं उनको मैं हाईलाइट करके बताऊंगी और कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ अगर रशिया पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाता है तो रशिया के इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, और अगर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होते हैं तो रशिया एक कदम पीछे चला जाता है, यानी पाकिस्तान से पाँव खींच लेता है. So welcome to my website. I will share its link in description section. So what are the major implications between Pakistan and Russia regarding the trade on Pakistan, like India-Russia relations? Pakistan और Russia have had a long and complicated history. As you know कि पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाते हैं अक्सर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ जाता है या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और रशिया के मसले पर जब अफ़गानिस्तान की हमायत करता है तो रशिया बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है. सो विथ रिलेशन ओनली रिसेंटली स्टार्टिंग टू वार्म अप. लेकिन कोशिश ये की, रशिया ने भी की, पाकिस्तान ने भी कि अपने जो ताल्लुकात हैं उनको थोड़ा वार्म अप कर लिया जाए, अच्छा कर लिया जाए, लेकिन फिर भी कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ. बट व्हाट इम्पैक्ट विल दिस न्यू फाउंड फ्रेंडशिप हैव ऑन इंडियाज़ रिलेशनशिप विद रशिया? लेकिन कौन से ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो कि इनकी फ्रेंडशिप पर पड़ेंगे अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात को इंडिया और रशिया के ताल्लुकात के साथ, या फिर रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को इस सिचुएशन के साथ डिस्कस करें कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो है इंडिया. ठीक है. सो अल्दो पाकिस्तान एंड रशिया हैव अ कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री टुगेदर, neither you have to firstly you have to look into the historical context. ठीक है, आपको सबसे पहले तो historical context को देखना होगा, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता, तो आपका पाकिस्तान के और रशिया के, पाकिस्तान इंडिया के करंट अफेयर के पेपर में कोई भी ताल्लुकात पढ़ना बेकार है. Neither nation however placed the other at the top of its foreign policy agenda, but in the late 1960s and early 1970s it's the most important date of a decade. ठीक है, एक दहाई का जो ये अरसा था, पाकिस्तान began reviewing its foreign policy and worked to strengthen ties with the Soviet Union. पाकिस्तान ने कोशिश की कि जो सोवियत यूनियन है उसके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए जाए, लेकिन इसमें भी कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता. सो पाकिस्तान प्रोवाइडेड अ बेस फॉर अमेरिकन इंटेलिजेंस गैदरिंग अगेंस्ट द सोवियत यूनियन अंटिल 1970. अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना हाथ थमाया. ठीक है, यानी अपना हाथ दिया, मतलब हेल्प दी. हेल्प किस लिए दी? कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है वो अगर ठीक हो जाए, और पाकिस्तान जो है उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, यानी रहनुमाई कर रहा था अमेरिका की, और जो अमेरिका काम कर रहा था वो रशिया के ख़िलाफ़ था, और पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की. 1970 में ज्वाइन बोथ द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेनेटो का मेंबर बना पाकिस्तान, एंड साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये MCQ स्क्रीनिंग पेपर में इनकी डेट्स आती हैं. ड्यूरिंग द कोल्ड वार, सो ऑटोमेटिकली रशिया हार्बर्ड मिसट्रस्ट एंड हॉस्टाइलिटी टुवर्ड्स इस्लामाबाद. यही वजह है कि रशिया जो है इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान पर उसने फिर हॉस्टाइलिटी यानी आपसी जो एक गर्मजोशी थी या एक दोस्ती या हमदर्दी, उसको मिसट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया. यानी रशिया ने पाकिस्तान के हवाले से ये तस्वर करना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान काबिल एतमाद नहीं रहा. हाउएवर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मॉस्को विजिट 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है मॉस्को का दौरा किया था. मार्क द फर्स्ट ऑफिशियल इंगेजमेंट बिटवीन द टू नेशंस. ठीक है, जिससे दोनों कौमों के दरमियान जो है एक ऑफिशियल इंगेजमेंट यानी आपसी ताल्लुकात कायम हुए थे. सो इन 1979 सोवियत इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान. आपको पता है ना, रूसी जारियत के हवाले से आपने अक्सर सुना होगा कि रशिया ने अफ़गानिस्तान में जारियत की, फंडामेंटली अल्टर्ड द डायनामिक्स ऑफ रीजन. ठीक है, और जो चेंजिंग कंडीशन थी उस खिते की उसको बहुत हद तक तब्दील कर. एंड पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एंटी सोवियत अफगान मुजाहिदीन अलॉन्ग विद द US. अब पाकिस्तान क्या कर रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा था, और उसकी पाकिस्तान का एजेंडा क्या चल रहा था कि एंटी सोवियत अफगान मुजाहिद, यानी इस तहरीक का ये बानी बना हुआ, लीडर बना हुआ था पाकिस्तान, कि हम रशिया के ख़िलाफ़ है कि रशिया अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे ना करे. रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड US इम्प्रूव, और इससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो गए थे, पाकिस्तान रशिया के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे. 1979 का एरा, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरा इन पाकिस्तान हिस्ट्री. सो वाइल दे सॉर्ट विद द सोवियत यूनियन. ठीक है, सॉर यानी खटाई में पड़ गई ताल्लुकात. So following the fall of USSR and the end of Cold War, relation between Moscow and Islamabad entered a period of mutual caution as both nations
turned their attention to other aspects of their respective international portfolio. تو پھر وہ جو اپنے انٹرنیشنل پورٹفولیو تھے واپس اس پر آ گئے. اس کے علاوہ میکھیل فریڈریکوف ان کا وزٹ ہوا تھا پاکستان. اچھا یہ میں ان کے حوالے سے بتا دوں کہ رشین پرائم منسٹر تھے. 2007 میں پاکستان انہوں نے وزٹ کیا تھا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی لمبے ٹائم بعد یہ رشیا کا پاکستان کا وزٹ تھا اور پھر رشیا نے یہاں پر ہاتھ بڑھایا تھا کہ پاکستان کے ساتھ 2007 میں تعلقات اچھے ہو جائیں. اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ واز اے سگنیفیکنٹ امپورٹنس ہے مارک دا فرسٹ ایور وزٹ بائی رشین پرائم منسٹر ٹو پاکستان. رشیا کے پرائم منسٹر کا یہ پہلا ایک وزٹ تھا سنس دا اینڈ آف سوویت یونین 38 ایئرس اگو. 38 سال پہلے. آفٹر دس رشیا اسٹارٹیڈ اسٹیبلشنگ ڈیپر ٹائز. رشیا نے تعلقات کو اسٹرانگ کرنا شروع کیا دو ٹریڈ ود پاکستان کے ساتھ تجارت کرے. ایز پارٹ آف کرملنز لارجر آؤٹ ریچ ٹو یوریشیا اینڈ اٹس وریز اباؤٹ ٹیررزم اسٹریمنگ فرام سچویشن ان افغانستان. ٹھیک ہے تو یہ ہے ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. اب جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرملن کی یوریشیا تک رسائی جب ہوئی نا تو افغانستان کی صورتحال سے پیدا ہوئے دہشت گردی کے بارے میں اس کی تشویش کا حصہ آپ اس میں ڈسکس کریں گے. تو یہ تھے پاکستان رشیا ریلیشن اور جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو انڈیا رشیا ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں. جب پاکستان افغانستان ریلیشن ٹھیک ہوتے ہیں تو پاکستان رشیا ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں. جب پاکستان امریکہ ریلیشن ٹھیک ہوتے ہیں تو پاکستان رشیا ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے مطلب ہمیشہ یہ تعلقات کھٹائی میں ہی پڑے رہے. بہت کم ایسا ہوا کہ تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہو بٹ کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا. Anyways, it was our today's topic and I hope you all like. You may join the smart session of CSS MPT جس میں آپ کو 50% آتا ہے MCQs انگلش کے, GSA 60% اور اردو کے 20% MCQs ہوتے ہیں, اسلامک اسٹڈیز 20 اور GK 50. ٹوٹل مارکس 200 اور جس میں سے 66 والا پاس ہوتا ہے. So if you are willing in joining the CSS MPT session then you may contact me for the section of English, GSA, Urdu, Islamic Studies, GK. GK covers your current affair and Pakistan affair portion. So you may contact me. I have provided my contact number right here. You may contact me. اور آپ کا جو سب سے کمپلیکس پورشن ہوتا ہے CSS اسکریننگ کا وہ ہوتا ہے synonyms, antonyms, English pressy portion of MCQs. ٹھیک ہے ایک پیراگراف دے دیتے ہیں. You have to choose the most apt answer from the passage and sentence correction, jumbled words, analogies, most repeated grammatical rules, past paper solution, each and everything will be discussed in this session. So it is the most important session for you. So if you are willing to join you may contact me. Take care of yourself. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.